Welcome to my channel, dear students and all the viewers. Okay, and this is the subject of about limit. Actually, आज ये जो वीडियो क्लास में पब्लिश कर रहा हूँ वो लिमिट का है, मतलब लिमिट जो एग्जिस्ट होता है एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है दैट इज़ 13.1 एक्चुअली 13 चैप्टर बट एक्सरसाइज इज 13.1. सो लिमिट का जो 13.1 का 32 वाला प्रॉब्लम जो है लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए आप लोग जानते हैं, जो मैं पहले वीडियो में जो मैं बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो होता है दोनों सेम होना चाहिए. सो वही लॉजिक से ये वाला प्रॉब्लम बना होगा. देखिए, सो यहाँ पे गिवन दैट 32 वाला प्रॉब्लम जो है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज द एम एक्स स्क्वायर प्लस एन व्हेन इज एक्स लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम व्हेन इज एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, and that is 0 less than equal to x less than equal to 1, and nx cube plus m is greater than 1. Okay, for what value of integer m and n does both when these and these limit exist. Okay, so mainly the question is that the value of m and n, okay, when the these two are exist. Okay, so now look at the point 0. We have to show the left hand limit for left hand lt, and that is equal to limit x tends to 0 minus and f of x. So for that limit x tends to 0 minus, so this is less than 0, you have to proceed the less than 0, and that is here actually mx square and plus n. Okay, if we put 0 then we got here n. So now right hand lt, and this is equal to limit x tends to 0 plus f of x, and this is actually more than 0. See which condition would be satisfied for more than 0. So this is a more than 0, so x greater than equal to 0. So we take this function for f of x, that is nx plus m. So if we put 0 then we got here m. Okay, so okay, therefore the limit x tends to 0 f of x is exist when m equal to n. Okay, this is the conclusion of the relation between m when are both the same. So then we can say the limit of x tends to 0 is exist. Okay, f of x is exist at 0. So now furthermore we have to show find the value of actually 1. Okay, see what are the value of at x equal to x tends to 1. So for left hand limit left hand lt of the function and condition here is x1 1 minus and f of x, so this is case is x less than 1, so this is a less than 1, so you put here nx plus m. Okay, and that is n plus m plus n. Okay, and now right hand and lt, and that would be limit x tends to 1 plus f of x, and that is equal to limit x tends to 1 plus f of x is more than 1. This is a more than 1, this is nx cube plus, so m, this is m plus n. See, so both are same as since since left hand lt equal to since left hand limit x tends to 1 minus f of x and equal to limit x tends to 1 plus f of x, so therefore limit x tends to 1 f of x is exist for all real values of m and n. Okay, so this is the conclusion of this problem. Okay, now I want to discuss about some points, that is the box function, and which is not introduced of this chapter, but for the comparative exam, see what is the box function to this chapter to be needed. So see for the discussion, see what is the box function, and some another 2-3 problem I want to discuss in this video. See what is the box function, like that this is called a greatest integer function or box function.
greatest integer function. Okay, greatest integer function. For that, if we take 2 on that x, so we can conclusion here is we get here 2. Actually, for minus 2 we take here as a minus 2 also, but if we take 2 point something, 2.98 something, so that would be actually 2, so only the integer part, so that's why it's called the greatest integer part. So this is the fraction part. Addition fraction part would be neglected, so here is integer is 2, but this is if we take here 2.0011 something, this also be this fraction part would be neglected, so though therefore the integer part is true. In case of negative, this is 2.1 something, but minus 2 minus 0.1, but see, this is the negative fraction, so I'm saying that the addition fraction part would be neglected, but this is not addition, this is a subtraction, so we want to get our addition fraction, so doing minus 3 and plus 1, and this is minus 0.1, and that is equal to minus 3 plus 0.9, so see here this addition fraction part, so it can be written as minus 2, like that we have to take the integer part is this. Okay, so that's why it's called the greatest integer function. For this type of problem of this chapter, यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे एग्जिस्टेंस के लिए फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रॉब्लम मैं चुन लेता हूँ, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं एट 0 पॉइंट में, जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x to the power box x is exist or not. So we want to discuss as with the help of box function. So this is here left hand and LT, and that is equal to, देखिए extends to 0 plus लिख रहा हूँ, that is okay, box x. Now box x approximately this is 0.0, this is positive 0 plus, so positive 0 plus means it would be either 0.0000 like that, 1 something, not exactly 0, this is approach to 0, see here this is approach to positive 0, so that would be equal to approximately this is, as we see the integer part 0 plus 0 0.000011 something, so that would be 0. But in case of negative, so if we take here minus point and 0 something, okay, like that, so what is the value of that? So this is a negative fraction. I am saying that the addition fraction would be neglected, so that's why this is a negative fraction. So if we take here minus 1, so 1 minus 0.00011 something, so here is minus 1 point plus 0.999 something. Okay, so this is part that would be saying neglected, so integer part is here minus 1. So this is the discussion about that. So there is a if x tends to approach to 0 positive, so we take box x is as a 0, so this is equal to limit x tends to 0 plus, and that is would be x tends to 0. Okay, this is x to the power 0, means this is 1 for right hand LT, and that would be limit x tends to, okay, I am wrongly, this is right hand, actually this is right hand, I am wrongly written, this is right hand and this is left hand. Okay, left hand limit, and that is 0 minus, so x to the power box x, so limit x tends to 0 minus and x to the power minus 1, so this is actually this is not defined, not okay, therefore limit left hand LT not equal to right hand LT, therefore limit x tends to 0 x to the power box x does not exist. Okay, so next problem. So see the discussion about the next problem. देखिए इसके बाद और एक सवाल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नॉट एग्जिस्ट के लिए. देखिए अच्छा से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में एग्जिस्टेंस के लिए.
जो सवाल मैं दे रहा हूँ शायद आप लोग देख के समझ लेंगे, जैसे एक ही वैल्यू आता है, एक्चुअली एक ही वैल्यू नहीं है। जैसे ये वाला प्रॉब्लम मैं जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे लिमिट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गलती कर देता है 1 माइनस कॉस एक्स एंड दिस इज बाई एक्स, एक्चुअली ऐसे दे दिया। इसका एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या मिलता है, सिंगल वैल्यू मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली दो वैल्यू शायद मिलेगा एट 0 प्लस और 0 माइनस में, इसीलिए शायद एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं वही हमको देखना पड़ेगा। ऐसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेके टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये जो यहाँ पे रूट ओवर दे के लिखा, सो इसका वैल्यू कितना होता है, एक्स टेंस टू 0 ओवर एक्स है, और ये है आपका 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो अंडर रूट है तो रूट 2 हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 एंड मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 एंड ओवर एक्स है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली दिस इज अंडर रूट, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स बाई 2 होना चाहिए, लेकिन गलती से आप लोग साइन एक्स बाई 2 लिख देते हैं, इसीलिए गलत हो जाता है। सो यहाँ पे अभी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ when x tends to 0, so therefore mod of sine x by 2, and that would be sine x by 2 actually, and when x is less than 0, so then mod of sine x by 2 क्या होगा, माइनस साइन एक्स बाई 2 होगा। इसीलिए लेफ्ट हैंड एंड एल टी एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्चुअली दिस इज यार क्या होगा, ये तो रूट 2 यहाँ पे था, और ये जो साइन है मोर देन सॉरी दिस इज लेस देन जीरो मतलब कितना होगा, माइनस साइन एक्स बाई 2 होगा, और नीचे एक्स होगा। सो अभी देखिए यहाँ पे बाई 2 दे दीजिए, यहाँ पे बाई 2 दे दीजिए। सो यहाँ पे रूट 2 यहाँ पे माइनस 1 आ चुका, ये 1 है, ये हाफ है, ओके। सो माइनस 1 बाई रूट 2 हो गया। सो राइट हैंड एल टी के लिए देखिए लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा, 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, सो यहाँ पे एक्चुअली रूट 2 है, एक्चुअली रूट 2 बाहर में लिखे, अंदर में एक ही बात है, रूट 2 बाहर में लिख देता हूँ, एंड मॉड ऑफ साइन एक्स दिस इज मोर देन जीरो मतलब यही होगा, तो साइन एक्स बाई 2 ओवर एक्स है, सो हाफ है इसीलिए बाई 2 दीजिए, यहाँ पे हाफ कर दीजिए, ओके। यहाँ पे होगा आप लोगों का रूट 2 इंटू वन बाई रूट 2, सॉरी दिस इज 2, सो दिस इज यहाँ 1 बाई रूट 2। देखिए दोनों आंसर अलग अलग आ रहा है, दोनों आंसर अलग अलग आ रहा है, एज लेफ्ट हैंड एल टी एंड नॉट इक्वल टू द राइट हैंड एल टी हो रहा है। सो देयरफॉर द लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स डस नॉट एग्जिस्ट, ओके। सो ऐसे ही करना पड़ता है लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।